पाकिस्तान में नए दौर का आगाज, सऊदी अरब के वली अहद आ गए। पाकिस्तान दोनों मुल्कों में अहम मुआहदे और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। कई शोबों में सरमायाकारी होगी, तरक्की का नया बाब खुल गया। सऊदी मेहमानों के लिए वजीर आजम हाउस में शाही इशाइया। Pakistanis, this is a great day. Saudi Arabia has been a friend, but needed friends. So Saudi Arabia has always been a friend in need, which is why we value it so much. वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि सऊदी अरब ने हमेशा वक्त पर दोस्ती निभाई, सऊदी अरब की मदद पर शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तानियों के लिए आज एक अजीम दिन है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को उस जगह ले जाना चाहते हैं जहां कभी ना थे। Especially for Hajis who save all their money for years to go for Hajj, we would just request you that, number one, that to allow them to do their immigration in Pakistan. पाकिस्तानियों को इमिग्रेशन में सहूलत दी जाए। सऊदी अरब में 3000 पाकिस्तानी कैद हैं। सऊदी अरब उन्हें भी अपना शहरी तस्वुर करे। मामूली जराइम में मुलविस कैदियों पर नजर सानी की जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान का इशाइये से खिताब, सऊदी वली अहद की इमरान खान को दोनों मामलात में ताउन की यकीन दहानी। Been a brotherly country and friendly country to Pakistan, and we've worked together in tough and good times, and we will continue the same thing, especially that Pakistan facing really great future today with a great leadership. Today we signed MOUs. We believe the amount of that kind of investment is $20 billion US. It's big for phase 1. पाकिस्तान और सऊदी अरब दोस्त मुमालिक हैं। पाकिस्तान में अजीम लीडरशिप है। पाकिस्तान का अच्छा मुस्तकबिल देख रहे हैं। पाकिस्तान से 20 अरब डॉलर्स के मुआहदे कर रहे हैं। मजीद सरमायाकारी भी करेंगे। सऊदी वली अहद का इशाइये से खिताब। वली अहद का पाकिस्तान आमद पर पुरतपाक इस्तकबाल। वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ ने मौज़िज़ मेहमान को रिसीव किया। वज़ीर आज़म गाड़ी खुद चलाकर शहजादे को पीएम हाउस लाए। शानदार गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इलाकाई धुनों पर रक्स भी पेश किया गया। सऊदी मेहमान रात ऐवान वज़ीर आज़म में क़याम करेंगे। सुबह ऐवान सदर में तकरीब होगी। सदर मुमलिकत से भी 1-on-1 मुलाकात होगी। सऊदी वली अहद को पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल एजाज निशान पाकिस्तान दिया जाएगा। सऊदी वली अहद के दौरे पर इस्लामाबाद की सिक्योरिटी हाई अलर्ट। रेड जोन मुकम्मल सील। इस्लामाबाद में मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। दफा 144 नाफिज। आज आम तातील होगी। कोई स्कूल और दफ्तर नहीं खुलेगा। यंग डॉक्टर्स और महकमा सेहत सिंध के मुज़ाकरात कामयाब। यंग डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म कर दी। कल से ओपीडीज बहाल करने का ऐलान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोनिस रजा। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की। अहम खबर से आगाज़ करेंगे। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान इस्लामाबाद पहुंच गए। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का नूर खान एयरबेस पर शानदार इस्तकबाल किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मौज़िज़ मेहमान को खुश आमदीद कहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा भी एयरपोर्ट पर मौजूद थे। वज़ीर आज़म खुद गाड़ी चलाकर मौज़िज़ मेहमान को अपने साथ पीएम हाउस लेकर गए। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को वज़ीर आज़म हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वज़ीर आज़म ने शाही मेहमान के एजाज़ में इशाइया भी दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सऊदी वली अहद को दिए गए इशाइये के मौके पर गुफ्तगू में कहा कि आज का दिन पाकिस्तानियों के लिए बहुत अजीम है। सऊदी अरब ने हमेशा दोस्ती निभाई है। उन्होंने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की पाकिस्तान आमद पर शुक्रिया भी अदा किया। Pakistanis, this is a great day. Not only is Saudi Arabia
people of Saudi Arabia living in our hearts because of Makkah and Medina, but also because Saudi Arabia has always been a friend for Pakistan. Saudi Arabia has been a friend when Pakistan has needed friends. So Saudi Arabia has always been a friend in need, which is why we value it so much. वज़ीर आज़म इमरान खान ने सऊदी वली अहद से आज़मीन हज को पाकिस्तान ही में इमिग्रेशन सहूलत फराहम करने की दरख्वास्त कर दी। इशाइये के मौके पर गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि सऊदी अरब में 25 लाख पाकिस्तानी वर्कर्स काम करते हैं। उन्होंने सऊदी जेलों में कैद 3000 पाकिस्तानियों का भी जिक्र किया और कहा कि सऊदी वली अहद मामूली जराइम में कैद पाकिस्तानियों के केसेस पर नजर सानी करें। Especially for Hajis who save all their money for years to go for Hajj, we would just request you that, number one, that to allow them to do their immigration in Pakistan. I just wanted to mention that there are 2.5 million Pakistani labor, mostly labor. There are white-collar workers there too. And I just want to say, Your Highness, that these are people very close to my heart. If we can just treat them, there are some 3,000 prisoners there, and we just would like you to bear in mind that they have poor people who have left their families behind. So just a request that these are very special people for us, this labor which goes abroad for working. A special request from them that, you know, please, sometimes they face hardships, and we would like you to look upon them as your own people. We feel that your people are brothers, and we would just like you to have that same feeling for them. Thank you very much. सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि पाकिस्तान से 20 अरब डॉलर्स के मुआहदे कर रहे हैं और आज उनका पहला मरहला मुकम्मल हो गया। पाकिस्तान में अजीम लीडरशिप है और पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन नजर आ रहा है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तानी आज़मीन हज को पाकिस्तान ही में इमिग्रेशन सहूलत फराहम करने और सऊदी अरब में कैद पाकिस्तानियों के मामले पर गौर करने की यकीन दहानी करा दी। Brotherly country and friendly country to Pakistan, and we've worked together in tough and good times, and we will continue the same thing, especially that Pakistan facing really great future today with a great leadership. So we believe that Pakistan gonna be very, very important country in the coming future, and we want to be sure that we are part of that. Today we signed MOUs. We believe the amount of that kind of investment is $20 billion US. It's big for phase one. And definitely it's gonna grow every month, every year in bigger numbers, and it will be beneficial for both countries. पाकिस्तान में नए दौर का आगाज, सऊदी अरब के वली अहद आ गए। पाकिस्तान दोनों मुल्कों में अहम मुआहदे और मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत। कई शोबों में सरमायाकारी होगी। तरक्की का नया बाब खुल गया। सऊदी मेहमानों के लिए वजीर आज़म हाउस में शाही इशाइया। Pakistanis, this is a great day. Saudi Arabia has been a friend when needed friends. So Saudi Arabia has always been a friend in need, which is why we value it so much. वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि सऊदी अरब ने हमेशा वक्त पर दोस्ती निभाई। सऊदी अरब की मदद पर शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तानियों के लिए आज एक अजीम दिन है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को उस जगह ले जाना चाहते हैं जहां कभी ना थे। Especially for Hajis who save all their money for years to go for Hajj, we would just request you that, number one, that to allow them to do their immigration in Pakistan. पाकिस्तानियों को इमिग्रेशन में सहूलत दी जाए। सऊदी अरब में 3000 पाकिस्तानी कैद हैं। सऊदी अरब उन्हें भी अपना शहरी तस्वुर करे। मामूली जराइम में मुलविस कैदियों पर नजर सानी की जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान का इशाइये से खिताब। सऊदी वली अहद की इमरान खान को दोनों मामलात में ताउन की यकीन दहानी। Brotherly country and friendly country to Pakistan, and we've worked together in tough and good times, and we will continue the same thing, especially that Pakistan facing really great future today with a great leadership. Today we signed MOUs. We believe the amount of that kind of investment is $20 billion US. It's big for phase one. पाकिस्तान और सऊदी अरब दोस्त मुमालिक हैं। पाकिस्तान में अजीम लीडरशिप है।
پاکستان کا اچھا مستقبل دیکھ رہے ہیں، پاکستان سے 20 ارب ڈالرز کے معاہدے کر رہے ہیں، مزید سرمایہ کاری بھی کریں گے، سعودی ولی عہد کا عشائیہ سے خطاب۔ ولی عہد کا پاکستان آمد پر پرتپاک استقبال، وزیر اعظم اور آرمی چیف نے معزز مہمان کو ریسیو کیا۔ وزیر اعظم گاڑی خود چلا کر شہزادے کو پی ایم ہاؤس لائے، شاندار گارڈ آف آنر بھی دیا گیا، علاقائی دھنوں پر رقص بھی پیش کیا گیا۔ سعودی مہمان رات ایوان وزیر اعظم میں قیام کریں گے، صبح ایوان صدر میں تقریب ہوگی، صدر مملکت سے بھی 1-on-1 ملاقات ہوگی۔ سعودی ولی عہد کو پاکستان کا سب سے بڑا سول اعزاز نشان پاکستان دیا جائے گا۔ سعودی ولی عہد کے دورے پر اسلام آباد کی سیکیورٹی ہائی الرٹ، ریڈ زون مکمل سیل، اسلام آباد میں موٹر سائیکل کی ڈبل سواری پر پابندی، دفعہ 144 نافذ، آج عام تعطیل ہوگی، کوئی اسکول اور دفتر نہیں کھلے گا۔ ینگ ڈاکٹرز اور محکمہ صحت سندھ کے مذاکرات کامیاب، ینگ ڈاکٹرز نے ہڑتال ختم کر دی، کل سے او پی ڈیز بحال کرنے کا اعلان۔ السلام علیکم، میں ہوں مونس رضا۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، اہم خبر سے آغاز کریں گے۔ سعودی عرب کے ولی عہد محمد بن سلمان اسلام آباد پہنچ گئے، شہزادہ محمد بن سلمان کا نور خان ایئر بیس پر شاندار استقبال کیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے معزز مہمان کو خوش آمدید کہا، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ وزیر اعظم خود گاڑی چلا کر معزز مہمان کو اپنے ساتھ پی ایم ہاؤس لے کر گئے۔ ولی عہد محمد بن سلمان کو وزیر اعظم ہاؤس میں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم نے شاہی مہمان کے اعزاز میں عشائیہ بھی دیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے سعودی ولی عہد کو دیے گئے عشائیے کے موقع پر گفتگو میں کہا کہ آج کا دن پاکستانیوں کے لیے بہت عظیم ہے، سعودی عرب نے ہمیشہ دوستی نبھائی ہے۔ انہوں نے سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی پاکستان آمد پر شکریہ بھی ادا کیا۔ For Pakistanis, this is a great day. Not only is Saudi Arabia, people of Saudi Arabia living in our hearts because of Makkah and Medina, but also because Saudi Arabia has always been a friend for Pakistan. Saudi Arabia has been a friend when Pakistan has needed friends. So Saudi Arabia has always been a friend in need, which is why we value it so much. وزیر اعظم عمران خان نے سعودی ولی عہد سے عازمین حج کو پاکستان ہی میں امیگریشن سہولت فراہم کرنے کی درخواست کر دی۔ عشائیے کے موقع پر گفتگو میں انہوں نے کہا کہ سعودی عرب میں 25 لاکھ پاکستانی ورکرز کام کرتے ہیں۔ انہوں نے سعودی جیلوں میں قید 3000 پاکستانیوں کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ سعودی ولی عہد معمولی جرائم میں قید پاکستانیوں کے کیسز پر نظر ثانی کریں۔ Especially for Hajis who save all their money for years to go for Hajj, we would just request you that, number one, that to allow them to do their immigration in Pakistan. I just wanted to mention that there are 2.5 million Pakistani labor, mostly labor, there are white-collar workers there too. And I just want to say, Your Highness, that these are people very close to my heart. If we can just treat them, there are some 3,000 prisoners there, and we just would like you to bear in mind that they have poor people who have left their families behind. So just a request that these are very special people for us, this labor which goes abroad for working. A special request from them that, you know, please, sometimes they face hardships, and we would like you to look upon them as your own people. We feel that your people are brothers, and we would just like you to have that same feeling for them. Thank you very much.
سعودی ولی عہد محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ پاکستان سے 20 ارب ڈالرز کے معاہدے کر رہے ہیں اور آج ان کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا۔ پاکستان میں عظیم لیڈرشپ ہے اور پاکستان کا مستقبل روشن نظر آ رہا ہے۔ شہزادہ محمد بن سلمان نے پاکستانی عازمین حج کو پاکستان ہی میں امیگریشن سہولت فراہم کرنے اور سعودی عرب میں قید پاکستانیوں کے معاملے پر غور کرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ Been a brotherly country and friendly country to Pakistan, and we've worked together in tough and good times, and we will continue the same thing, especially that Pakistan facing really great future today with a great leadership. So we believe that Pakistan gonna be very, very important country in the coming future, and we want to be sure that we are part of that. Today we signed MOUs. We believe the amount of that kind of investment is $20 billion. It's big for phase one, and definitely it's gonna grow every month, every year in bigger numbers, and it will be beneficial for both countries.